all love reading storybooks. Every story is framed with sentences, and sentences are framed using words. And what are words made up of? They are made up of letters. If you notice, then everything around us is made up of one or the other smaller entity. These small entities are called basic units. Did you know that even our body is made up of basic units? Yes, it is. Although it appears to be one single body, it's actually made up of millions of basic units coming together. What are these units called? They are known as cells. Cells come in different numbers to form a body, rather, any living organism's body. Can you guess the minimum number of cells required to form an organism's body? Do you know the answer? There are organisms which are made up of only a single cell. They are called the unicellular organisms. Bacteria are one of the best examples of this category. What are organisms like us called then? We belong to the category of multicellular organisms. Those having several cells to make up the body are called multicellular organisms. Now the next important question is, if there are so many cells in our body, then are all of them exactly the same? Of course not. There are many number of cells in our body, and so are their types. Look at these cells, for example. These look so different. But astonishingly, all three are a part of our body. This one is an ovum, this is a neuron, and the last one is a red blood cell. Their structures, shapes, sizes are totally different from each other, and so are their functions. This is how various types of cells come together in different numbers to form our body. We have this knowledge today, but ever wondered how all this was actually discovered? Let us go back in time and have a look at the history of cellular studies. Lesson 8, Cell Structure and Function. This is the part of biology where we are going to learn that what is a living thing made up of. In chemistry tells us that matter around us, everything which you see around us, is made up of atoms. Atoms make molecules, and these molecules make a cell. That's where the living world starts. So cell is the basic unit of life. सेल के पहले जो भी पार्ट्स है वो लिविंग नहीं है. And atoms are made up of electrons, protons and neutrons, which we will learn in 9th and 10th standard. So small things make up atoms, atoms make molecules, and molecules make a cell. This chapter is of biology about cell. Introduction. Living things carry out some basic functions. Living things carry out some basic functions like breathing, eating, excreting, reproduction. Therefore, the cell is called living. Basic structural unit of any living thing is cell. It's a definition of cell. What is a cell? The basic structural unit of any living thing. You can compare cells to bricks. Bricks create walls, cells create living things. The story of discovery of cell. How was cell discovered? Who discovered it, etc. Robert Hooke was a scientist. In 1665, he observed slices of cork under a microscope. Let's explore how does Robert Hooke look. 1665 में photography technology नहीं थी. So there is no photograph of Robert Hooke, but this is how he looked. And Robert Hooke in 1665 discovered cells. How? By using a microscope. Let's see Robert Hooke's
माइक्रोस्कोप। तो 400-500 साल पहले का माइक्रोस्कोप कुछ ऐसा दिखता था। इट वॉज मेड अप ऑफ वुड एंड ब्रास and it was working without electricity. So Robert Hooke used a microscope and found out that the smallest living thing on the planet is a cell. He took a part of cork tree. See, this is a cork tree. और कॉर्क वो जो वाइन बॉटल के ऊपर होता है ना, that is wood, but it is so soft that you can use it as a stopper for a bottle. And this is a cork tree. So what he did is he took a part of the cork tree and put it under microscope and saw something. What did he do? What did he do? तो नहीं, what did he see? He saw cork cells. This is what he saw. Compartments. और ये कंपार्टमेंट्स हनी बी के घर जैसा हनीकॉम स्ट्रक्चर था. एंड बाय लुकिंग एट दिस कंपार्टमेंट्स ही कॉल्ड देम एज अ सेल. So this photograph, if you ask me, contains hundreds of cells. This is one cell, this is second cell, third cell and so on and so forth. और ये बहुत सारे सेल मिलके कॉर्क ट्री का ट्रंक बनता है. Therefore, cell is the smallest living thing on the planet. There was honeycomb structure which was observed. The boxes are separated by walls or partition, and that is called cell wall. And each box was called cell by Robert Hooke. They were dead cells. Why dead cells? Because the tree is dead. Microscope improved in coming 150 years. माइक्रोस्कोप जो रॉबर्ट हुक ने यूज किया था वो बहुत प्रिमिटिव था, बट इन कमिंग 150 years the microscope developed so well that we can now see living cells also. पहले हम सिर्फ dead cells देख सकते थे, but now living cells also can be observed. So that's the story of Robert Hooke, who discovered the cell for the first time. अगर हमसे पूछा जाए कि सभी ऑर्गेनिज्म के शरीर का बेसिक यूनिट क्या है, तो मुझे यकीन है कि आपका जवाब सेल होगा. ये हम अब जानते हैं, लेकिन वास्तव में ये कैसे खोजा गया? सेल्स पर किसने काम किया था उन्हें इतनी अच्छी तरह से समझने के लिए? चलिए इस वीडियो में इन सवालों का जवाब दें. उसके लिए हमें समय में वापस जाना होगा और शुरू करना होगा सेल की स्टडीज के इतिहास में सफलताओं के साथ. ये 1665 की बात है, जब रॉबर्ट हुक नामक एक बहुत बड़े इंग्लिश साइंटिस्ट ने एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट पेश किया. इस दौर में नए आविष्कार किए गए इंस्ट्रूमेंट्स का बोलबाला था, जैसे कि माइक्रोस्कोप्स. रॉबर्ट हुक ने एक खुद के डिजाइन किए गए माइक्रोस्कोप के साथ ट्री कॉर्क के एक पतले टुकड़े को देखा. उन्होंने देखा कि छोटे स्ट्रक्चर्स एक साथ क्लस्टर यानी कि झुंड में थे. उन्हें ये स्ट्रक्चर्स खाली दिखाई दिए और उनके साफ तौर पर बॉर्डर्स थे. क्या वे किसी स्ट्रक्चर से मिलते जुलते हैं? खैर, पहली नजर में वे मधुमक्खी के छत्ते से मिलते जुलते हैं, लेकिन रॉबर्ट हुक के लिए ये स्ट्रक्चर्स मॉनेस्टरी के छोटे कमरों की तरह थे जहां मॉन्क्स रहते थे. इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस खाली स्ट्रक्चर्स को सेल नाम दिया. सेल क्यों? सेल शब्द का मतलब है खाली कमरा, जहां मॉन्क्स या नन्स रहते थे. यही कारण है कि उन्होंने इसको सेल्स का नाम दिया. तो वो ही थे जिन्होंने इन्हें सेल का नाम दिया. हालांकि उनकी खोज गजब की थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जानकारी जीवन के बारे में पढ़ने के लिए काफी थी? उनके द्वारा देखे गए सेल्स खाली बॉक्सेस जैसे थे. अगर सेल के अंदर कुछ भी नहीं है, तो आगे क्या पढ़ सकते हैं? खैर, बहुत कुछ है. चलिए इसके बाद आगे क्या हुआ देखते हैं. ग्लासेस और लेंसेस से प्रभावित होकर एंटोनी वैन लीवेनहुक नामक एक डच बिजनेसमैन ने अपना माइक्रोस्कोप बनाया. आमतौर पर ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के रूप में जाने जाते हैं. उन्होंने एक ऐसा माइक्रोस्कोप डिजाइन किया जो माना जाता है कि आज के कई माइक्रोस्कोप से बेहतर है.
ऑब्जर्वेशन से प्रभावित उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे डेंटल स्क्रैपिंग की भी जांच की। हालांकि यह अजीब सुनाई देता है, लेकिन इसी तरह वो एक माइक्रोस्कोप के नीचे जीवित सेल्स को ऑब्जर्व करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। आपको क्या लगता है कि उन्होंने डेंटल स्क्रैपिंग में क्या देखा? ये स्पष्ट है कि कई छोटे बैक्टीरिया थे, लेकिन उन्होंने उनका नाम ऐसा नहीं रखा। इसके बजाय उन्होंने उन्हें एनिमलक्यूल्स कहा, क्योंकि उनके लिए वे चलते हुए जानवरों के समान थे। खैर, इस तरह से सेल की स्टडी के इतिहास में उपलब्धियां हासिल हुई थी। The cell, basic structural unit of living organism, is called a cell. This is a definition. Basic structural unit, 3 words. Structural units, जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं। एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब ब्रिक्स, जिससे वॉल में से बिल्डिंग बनता है। बट थिंक एंड टेल मी, आर ऑल ब्रिक्स द सेम? No. Some of the bricks are made up of stone, some are made up of the red material, soil, and some are made up of cement. Some are big bricks, some are small bricks. Some are decorative bricks, some are bricks for strength. तो अगर हर एक टाइप की ब्रिक अलग होती है, तो हर एक टाइप का सेल भी अलग होता है। They have different shape, they have different size, they have different design, and they are present in different numbers. हर एक का पॉपुलेशन अलग होता है, शेप अलग होता है, साइज और डिजाइन अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, एग ऑफ अ हैन, अंडा, पूरा अंडा एक सिंगल सेल है। इट्स नॉट मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। जैसा हमको लगा कि अरे इतना बड़ा है, इसमें तो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होंगे, बट ऐसा नहीं है। द एंटायर एग ऑफ द हैन इज अ सिंगल सेल विच कैन बी सीन विथ नेकेड आइज। उसमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। तो अंडा देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, इट इज वन सेल। बट इफ यू टॉक अबाउट एन एंट, then ant is made up of many cells. So moral of the story, you can never guess कि the organism which you are seeing is made up of one cell or many cells. तो वो guess work नहीं चलता है, माइक्रोस्कोप के अंडर रिसर्च करके ही पता चलता है that इतना बड़ा अंडा। You know what is the largest cell in the world? एक सिंगल सेल सबसे बड़ा दुनिया का कौन सा है? Let's see, I'll show you. Largest cell in the world, it is the cell of an ostrich egg. Look at this lady, इसके दोनों हाथ भर गए, और ये है ऑस्ट्रिच का अंडा जो बहुत बड़ा होता है, बट दिस इज वन सेल। और इसकी जगह पे तुम एक चूहा पकड़ लो जिसकी साइज शायद ये अंडे से छोटी है, बट वो चूहा करोड़ों सेल्स से बना है। So some cells are huge, some cells are very small. Variety in number, shape and size. This paragraph tells you that cells are in different numbers, different shape and different size. Size तो हमने discuss की that egg of ostrich is the largest cell in the world. And then we are made up of skin cells, teeth cell, eye cell, hair cell, bone cell, kidney cell, liver cell, stomach cell. ये सारे सेल्स मिला के ह्यूमन बनता है, और वो सारे छोटे छोटे हैं जो नॉर्मल आइज से नहीं दिखते। हाउ टू सी द सेल्स इनसाइड माइक्रोस्कोप? सेल्स एज सच इनविजिबल होते हैं। सो व्हेन यू टेक अ स्मॉल पीस ऑफ समथिंग एंड पुट इट अंडर अ माइक्रोस्कोप टू सी, कुछ नहीं दिखेगा, बिकॉज दे आर ट्रांसपेरेंट। तो फिर कैसे देखने का? बाय यूजिंग केमिकल्स विच आर कॉल्ड स्टेन्स। सो आई विल शो यू एन एनिमेशन हाउ यू कैन विजुअलाइज सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। और सेल्स देखने के लिए हमने सब्जेक्ट चूज किया है ऑनियन पील्स। કાંદો હોય, કાંદાની એક સ્લાઇસ લેવાની, અને એ સ્લાઇસમાંથી એક પતલું ટ્રાન્સપરન્ટ લેયર નીકળે, ખબર છે? ઇફ યુ હેવ નોટ ઓબ્ઝર્વ ધીસ, ગો ઇનટુ યોર કિચન, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ ऑनियन एंड ब्रेक इट एंड सी, उसमें से एक स्किन निकलेगी पतली सी, और वो पतली स्किन को माइक्रोस्कोप के अंदर रख के
we can see the cells, but they're transparent. Therefore, what we do is put one drop of a color, and that color is called stains. Different type of stains. When I Google that for slides, see, purplish, greenish, bluish. The as such cells are transparent, but when you put stains, only then you can see their shape, their size. You can see inside them also. So stains are of different types, and stains are used to color the cells so that we can see them easily under a microscope. So let's see how to observe cells under a microscope. In this video, I'm going to show you how to prepare a wet melt slide of stained onion epidermal cells. Here's my microscope slide. I want to have that out and ready. I can obtain my specimen from one layer of onion bulb. If I look at this layer, one side is kind of rough and matte, and the other side is smooth and shiny. I need to break my onion layer towards the shiny side, and then very gently peel the two pieces apart. There's a thin, transparent layer of cells holding these two pieces of the onion layer together. That's the layer of epidermal cells that I'm looking for my specimen. Now I need to obtain a piece of that onion epidermis to place on my slide. I can do that by tearing it off with a pair of tweezers. This is a very delicate, thin layer of cells, and they'll fold over on themselves, so when you place that onto the slide, once you get it off your tweezers, you're going to need to spread it out a little bit. The little piece of onion epidermis can easily get all wadded up, and that makes it very difficult to see the cells. While filming in the lab, I forgot to include an easier alternate technique for getting that onion skin onto the slide, so I'm going to show it to you here in my dining room with my two helpers. The best way to get a large, flat sheet of these onion epidermal cells is to peel that layer of onion skin off directly onto the slide. It's very thin, it'll wrap right around the slide just like saran wrap. So apparently I've lost my helpers because onions are way too stinky, so we might as well head back to the lab. For this wet melt, I'm just going to use iodine. This will provide the wet part of the wet melt, and it will also stain the cells and make them easier to see. Now I'm going to obtain a cover slip, a clear square, that I'm going to place on top of my specimen on the slide. The best way to apply that cover slip is to hold it at a right angle to the slide at one side of your specimen, and then let it drop, let it fall. As it falls, it will push the air out, and you'll have fewer air bubbles this way. Here's my finished, prepared specimen. Here's a closer look at the application of that cover slip. Again, I hold it at a right angle to the slide, I let it drop, that pushes the air out, sometimes I get a little tap, and now I'm all set. I'm now going to examine my specimen using the 4x objective lens that will magnify the specimen 40 times actual size. As you can see here, these are cells of onion peel. And parfocal lens, ये अलग अलग lens होती है. This is the modern microscope, and you can zoom in, and when you zoom in you can see fibers inside, you can see the cell wall. हर एक cell को एक strong wall है, और जो छोटे छोटे dots है अंदर एकदम light, these dots are called nucleus. So there are hundreds of varieties of modern microscopes available, under which you can see all different types of cells. You can change this lens, and accordingly you can zoom in and see extreme close-up of a single cell. And yellowish color is because of stain. So you saw how we can see under a microscope, use a microscope, see onion peels. Similarly, you can see hundreds of things under a microscope and observe the shape, size, and number of cells in it. Let's discuss number of cells. A tree, an elephant, or a human being have trillions of cells inside it, and they are called multicellular organism. A living thing which is made up of more than one cell is called a multicellular organism. Multi means many, cellular means cell. But surprisingly, when they are born for the first time,
They all start their journey as a single cell. So you and me today are made up of millions of cells, but when you and me were taking birth, when a tree was taking birth or an elephant was taking birth, in the mother's womb, inside the mother's body or inside the seed, they were single cell called a fertilized egg. तो fertilized egg एक single cell होता है जिसमें से बहुत सारे cells बन के एक living thing बन जाते. How? Because cells know how to grow and cells know how to divide. So cells grow in size, cells divide. So this is a single cell. Then it became 2, 3, 4, 5. It keeps on dividing and finally this group of cells becomes a single living organism like a fish. But not everybody on this planet are multicellular. Some are unicellular. Unicellular matlab they live as a single cell and they die as a single cell. Just a single cell is a living organism. When I say hi George, तो जॉर्ज ये फिश का नाम है, उसके सेल का नाम नहीं है, क्योंकि उसके तो करोड़ों सेल है, तो क्या करोड़ों नाम दूं मैं? बट व्हेन आई से हाय जूली, it's just a single cell. So Julie is a single cell, but George is a group of thousands of cells. That's unicellular and multicellular. Amoeba and Paramoecium are two examples of unicellular organisms. They live in water, and let's try to see how do they look living inside water. Live amoeba under microscope. They are transparent. This is just one drop of water and you can see so many small microorganisms are roaming around. This is zoomed in. This is amoeba. This is amoeba. And amoeba is a shapeless single cell organism and it moves by changing the shape of the body. These are other types of cells. These are red blood cells. हमारे खून के अंदर होते हैं. So you can see blood inside a microscope also. Let's see a paramoecium under a microscope, how it looks. વરસાદની ઋતુ એટલે ફ્રીઝ. ડવ કન્ડિશનર સાથે મેળવો સ્મૂથ ફ્રીઝથી સુરક્ષિત વાળ. This is a paramoecium. It's living inside water. It cannot live without water and it's a single cell. And they can swim. You can see the body of paramoecium. Inside paramoecium there are a lot of small things which we will learn later. So that was about the number. Now let's discuss something about their shape. हर एक का shape अलग होता है. That's the only important thing which we have to understand. Shape. Amoeba has an irregular shape. You already saw amoeba. Living amoeba. It has pseudopodia. Pseudopodia means a false feet. एक नकली पैर. So when amoeba wants to move,
अमीबा अपने शरीर को फैलाता है. Let's say amoeba wants to move down. So what will amoeba do? It will spread its body in downward direction and start moving down. So this thing which came out from its body is called pseudopodia. Pseudo मतलब fake, नकली, पोडिया मतलब लेग. तो अमीबा के पास एज सच लेग्स नहीं होते, बट फेक लेग्स होते हैं और फीट, फॉल्स फीट. व्हाइट ब्लड सेल्स ब्लड में होते हैं. व्हाइट ब्लड सेल्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप. सम आर राउंड, सम आर spherical, and spherical cells होते हैं RBC. Red blood cells you can see here in the photograph, they are round. Some cells are pointed like muscle cells. Do you see these cells? 3 cells का diagram है, and this is a muscle cell. It's a pointed cell. Some are long. Example, nerve cell. So this is an example of nerve cell. You can see its shape is so different than red blood cell. So red blood cells are round, muscle cells are pointed, and nerve cells जिससे हमारा ब्रेन बनता है, जिसमें मेमोरी आती है, that nerve cell is long. Spherical red blood cell of human, spindle shaped cell of muscles. Objective question. Spindle shape मतलब pointed ends, ऐसा. This is called spindle shaped. And long branched nerve cell. You see the branches here? That's a part of nerve cell. So all cells in the universe have different shape. Nerve cell का दूसरा नाम है न्यूरॉन. Nerve cell का दूसरा नाम न्यूरॉन. Shape is given by cell membrane and cell wall. ये कौन shape देता है उनको? The shape is given by cell membrane and cell wall. Both we will see later. Bacteria also has cell wall. So तुम्हारी टेक्स्ट बुक में बायोलॉजी के अंदर पैराग्राफ के अंदर सिर्फ डिस्कशन होता है, लंबा लंबा डिस्कशन, एंड इट डिपेंड्स ऑन यू what is important. You have to capture that. I have already done your job. I have written all this which is important. तो तुम अगर इतना पैराग्राफ याद रखो तो टेक्स्ट बुक का हर एक पॉइंट याद रह जाएगा. So once again I am saying you that we are discussing shape here, and shape of the cells are of variety. Some is shapeless with fake feet, some are round, some are spherical, some are pointed, some are branched and long. So you can see here the cells of various shapes. Some are round with a thick edge, some have short fibers, some are star shaped, some are round. Nerve cells are long, fibrous. Smooth muscle cells are sharp and pointed, called spindle shape. Human sperm, small body and a very long tail, etc. etc. Coccus, Coccobacillus, Vibrio bacillus, Spirillum, Spirochete, these are all names of the shape. These are all different types of cells inside an animal. This is also all different types of cells in a human being. So cells have different shape, different size, different number. Size of the cell. Cells are really small. Exceptions are egg cell of chicken, sparrow, peacock, or the biggest cell ostrich. But if you remove the eggs of the birds, most of the cells on the planet have a very small size. And the size can be as small as a millionth of a meter. 1 meter distance के 1 million टुकड़े करो. 1 million pieces is 1 followed by 6 zeros. That's how small a cell can be. And 1 millionth of a meter is called 1 micrometer or 1 micron. ये objective question है.
1 मीटर को डिवाइड करो into 1 million pieces, what you get is a very small size called 1 micrometer. माइक्रो का सिंबल होता है U, दोनों तरफ पूछड़े होते ऐसा U. Micrometer, and micrometer can also be called as micron. Or if you talk about how large can a cell be, it can be as large as a few centimeters. तो 10, 20, 30 सेंटीमीटर का लार्जेस्ट सेल होता है 17 सेंटीमीटर by 13 सेंटीमीटर एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एंड स्मॉलेस्ट सेल होता है 0.1 to 0.5 माइक्रॉन, विच इज बैक्टीरिया. तो स्मॉलेस्ट लिविंग सिंगल सेल्स ऑन द प्लैनेट इज बैक्टीरिया. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट लिविंग सिंगल सेल bacteria, and largest living single cell ostrich, and size you have to by heart. The size of the cell is not related to the size of animal. Elephant एक बहुत बड़ा एनिमल है. Does it mean उसके cells बड़े हैं? नहीं. Size of the animal has nothing to do with size of the cell. Rat एक छोटा प्राणी है, क्या उसके cells छोटे हैं? नहीं. So there is no relation to the living size and the cell size. So elephant and rat are big and small, but their cells, for example, उन दोनों के nerve cells की size same है, function same है, shape same है, because they belong to a similar family of animals. That's the discussion on size which you have to remember. Oh, wow, doesn't it look amazing? Now, before studying these, tell me one thing. Do plants and animal cells look the same? Do they have the same organelles? Or are the two types different in some ways? Well, plant and animal cells are slightly different. When cells from a human cheek are scraped with a sterile cotton bud and mounted, similar but not exactly same cells are seen under the microscope. Roughly, we have these thick, distinct borders that differentiate each cell from the other one. Then we have these thin, tiny dark spots scattered all over. Also, we can spot this prominent circular structure here, which is very darkly stained. Any ideas what these things are? Well, these are the cell constituents. Let's get introduced to each in the next video. This is a very important part of the chapter, cell structure and function. Now we are going to see in detail what is inside the cell. What is cell made up of? What are the parts of cell? Cell is made up of different structures, and each structure has a specific function. सेल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन मतलब काम होता है. Lot of similar cells, when they work together performing a common function, is called a tissue. So as I was discussing in the beginning of the chapter, electrons, protons, neutrons together create an atom. Different atoms create molecules. Different molecules create cell parts, and these cell parts create a living cell. And एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, जब बहुत सारे सेल साथ में रहते हैं, then they are called tissues. So tissues is nothing but a group of cells performing similar function. The first part of the cell we will understand is a cell membrane. And cell membrane is one of the three main parts of the cell. Cell के 3 main parts होते हैं, और कौन से 3 main parts है वो देखो. The 3 basic components of cell is cell membrane, nucleus, cytoplasm.
And if I have to draw these three, they are very easy. Imagine करो एक मार्बल है, ग्लास नहीं आवे ना गोटी, उसको तुमने एक बलून में डाल दिया और बलून के अंदर पानी भर दिया और बंद कर दिया. This rubber from which the balloon is made is cell membrane. This marble behaves as the nucleus, and the water which is filled inside the balloon is the cytoplasm. Cytoplasm is liquid, जैसे water is liquid. Rubber is protective layer, जिससे पानी अंदर रहता है, that's the cell membrane. And nucleus is small, जैसे marble है, it's a small thing inside a balloon full of water. So cell membrane, nucleus and cytoplasm are the three main components of a cell. Let's look at cell membrane in detail. Cell membrane का दूसरा नाम है plasma membrane. And plasma membrane separates the outside and inside of the cell. ये बलून का काम है कि बाहर हवा है और अंदर पानी, और हवा और पानी को वो मिक्स नहीं होने देता है because the rubber is a boundary. Cell membrane also does the same thing. It does not allow the inside of the cell to mix with the outside of the cell. Inside outside are kept separate by cell membrane. It separates the two cells also. दो सेल बाजू बाजू में है तो वो अपने पार्ट्स मिक्स नहीं होने देते हैं because they all have their own individual cell membranes. But is this membrane with holes? Yes, this membrane is porous, means it has pores, और pores का मतलब होता है holes. वहाँ पे डिफरेंस है कि रबर का जो बलून का रबर है वो पोरस नहीं है, इट डज नॉट अलाउ वाटर एंड एयर टू गो इन एंड आउट. बट सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज पोरस, विच मीन्स इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ वाटर, it allows entry and exit of oxygen, it allows entry and exit of carbon dioxide, because all these are necessary for life. जिंदा रहने के लिए सेल को अपने अंदर कुछ चीज़ें डालनी पड़ती है. इट अलाउज एंट्री ऑफ न्यूट्रिशन, खाना पीना, एंड इट अलाउज एग्जिट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल्स. एक्सक्रीटरी मटेरियल्स मतलब बैड थिंग्स विच हैव टू बी थ्रोन आउट, गार्बेज. So cell is a living thing which breathes air, which removes carbon dioxide, which requires water for living, which takes nutrition inside and which removes the garbage outside. और ये पूरा अंदर बार happens because of plasma membrane, because or cell membrane, because plasma membrane and cell membrane are porous. કાણા હોય અને એ કાણામાંથી વસ્તુનું આવન જાવન થાય. अहमदाबाद इज अ वॉल्ड सिटी. तो अहमदाबाद के अराउंड पहले एक फोर्ट हुआ करता था, अ वॉल, एंड नोबडी वाज अलाउड टू एंटर अहमदाबाद एक्सेप्ट फॉर द गेट्स. दिल्ली दरवाजा, लाल दरवाजा, प्रेम दरवाजा, रायपुर दरवाजा, दरियापुर दरवाजा, सब दरवाजा है, तुमको पता है अहमदाबाद में. और ये सारे दरवाजे के अंदर एंट्री एंड एग्जिट वाज अलाउड, और बाकी की वॉल एक्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन फॉर प्रोटेक्शन. So that is the structure of cell membrane. You can read here, it says cell membrane allows the movement of material in and out. और सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेकेंड प्रोटेक्टिव लेयर होता है सेल वॉल, बट सिर्फ प्लांट सेल्स में. Central dense round body is called nucleus, and jelly-like substance inside the cell membrane is called cytoplasm. So the three main parts of cell
ये किसका फोटो है, गेस कर सकते हो? लिखा हुआ है ऑनियन पील. वी हैव ऑलरेडी सीन रियल ऑनियन पील अंडर अ माइक्रोस्कोप. एवरी ऑनियन पील इज मेड अप ऑफ सेल्स, और ये जो है दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन. ये जो है दिस इज न्यूक्लियस. एंड दिस येलोइश कलर जो पूरे सेल में फिल्ड है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. सेल मेम्ब्रेन का काम, ओके, सेल वॉल, एक और चीज रह गई. प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल में एक या दो ही फर्क है. प्लांट सेल के पास सेल मेम्ब्रेन है. एनिमल सेल के पास है. प्लांट सेल के अंदर छोटा सा राउंड डेंस टाइटली पैक्ड न्यूक्लियस होता है. और एनिमल सेल में भी होता है. द cell of the plant is full of a liquidy material, and that liquidy material is called cytoplasm. Yes, animal cell is also full of that liquidy material called cytoplasm. Yes. तो सब कुछ तो सेम है? नहीं. फर्क ये है that plant cell contains something which animal cell does not, and that something is a cell wall. तो प्लांट के अराउंड एक थिक प्रोटेक्टिव सेल वॉल होती है. इट्स लाइक डबल प्रोटेक्शन, जो एनिमल के पास नहीं है. दिस इज कॉल्ड सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप ऑफ द सेल. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. सेल मेम्ब्रेन के काम क्या है? प्रोटेक्शन, एंट्री एग्जिट कंट्रोल करना, शेप देना. एंड सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल अगेंस्ट अनइवन टेम्परेचर्स, विंड स्पीड, हाई एंड लो मॉइस्चर, एक्सेट्रा. ट्री को हम कपड़े नहीं पहना सकते. ट्री के अराउंड हम घर नहीं बना सकते. अ प्लांट इज ऑलवेज आउटसाइड इन द ओपन. एक्सट्रीम गर्मी में भी प्लांट बेचारा बाहर है, एक्सट्रीम ठंडी में भी प्लांट बाहर है. देयरफॉर प्लांट नीड्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. दैट्स व्हाट दे हैव सेल वॉल. प्लांट्स के नॉट मूव. तड़को लागे हालो अपने छाया में जाइए, प्लांट वो नहीं कर सकता. ठंडी लग रही है, मेरे को घर के अंदर जाना है, प्लांट वो नहीं कर सकता. बट एनिमल कर सकते हैं. एवरी एनिमल कैन रन अवे फ्रॉम हीट, रन अवे फ्रॉम लाइट, एक्सट्रीम कोल्ड, टू मच वाटर. फ्लड हो गए तो एनिमल सारे भाग जाएंगे, बट प्लांट भाग सकते हैं, प्लांट डूब जाते हैं. तो बिकॉज प्लांट कैन नॉट गो एनीवेयर, देयरफॉर प्लांट सेल हैज गिवन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एंड दैट एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इज अ सेल वॉल. Plants cannot move, hence need extra protection from weather and other factors. So I hope you are understanding. This is human cheek cells. Human is an animal. Therefore they are animal cells. And animal cells के पास cell wall नहीं होती. क्या होता है? Cell membrane. So this is the cell membrane which gives the shape. This is the nuclear membrane, and this is the nucleus. So cell के अराउंड सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में जो फिल किया हुआ मटेरियल है, that material is called cytoplasm. The blue ball is called nucleus. अगर ये प्लांट सेल होता तो एक मेजर डिफरेंस होता. सेल मेम्ब्रेन के बाहर देयर वुड हैव बीन अ सेल वॉल टू गिव इट एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जानते हैं. इट इज जेली लाइक. इट्स नॉट प्योर लिक्विड, इट्स लाइक अ जेली. इट्स प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. सी हियर, ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये दोनों के बीच में फुल है साइटोप्लाज्म. दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन,
और वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में फिल है साइटोप्लाज्म. सो रिमेंबर द लोकेशन ऑफ साइटोप्लाज्म. इट्स अ जेली लाइक मटेरियल. इट कंटेन्स all organelles of the cell, for example mitochondria, Golgi body and ribosome. मतलब ये that cell membrane के अंदर न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, खुद न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का पूरा पोर्शन इज फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म. और ये साइटोप्लाज्म जेली के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स. द ऑर्गेनल्स आर which are floating inside the cytoplasm: mitochondria, Golgi body, ribosome. Ribosomes, mitochondria and Golgi body. ये तो सिर्फ 3 है. Actually there are 10 more. So there are 10 different types of organs which are floating in the cytoplasm. Nucleus is the headquarters of the cell. इसके अंदर DNA होता है और कुछ नहीं. So nucleus is headquarters, cell membrane is protective layer और बीच में सारे organs होते हैं. Nucleus. Nucleus is spherical. वो एक round shape होता है and it is almost always in the center of the cell. It is stained easily and seen with a microscope. So whatever cells you have seen under the microscope, if it's a living cell, it will have a nucleus. रॉबर्ट हुक ने जब सेल्स देखे थे उसमें उसको न्यूक्लियस नहीं दिखा था बिकॉज दोज वर डेड सेल्स एंड डेड सेल्स आर एम्प्टी. अंदर का सारा मटेरियल चला गया है, सिर्फ हड्डियां बची है, मतलब सेल वॉल. बट लिविंग सेल हैज एवरीथिंग एंड न्यूक्लियस इज इजीली विजिबल because it gets colored easily. It has a nuclear membrane and nuclear membrane is also porous. मतलब entry exit is allowed, movement of material in and out is allowed. Inside nucleus there is something called as nucleolus and there are thread-like structures called chromosomes. Chromosomes have DNA and information about inheritance and characteristics of the parents, and chromosomes are only seen when the cell divides. This information you have to remember when they ask a short note on nucleus. मैं फिर से पूरा सेल ड्रॉ कर रहा हूं. प्लांट सेल है तो द आउटरमोस्ट थिंग इज अ सेल वॉल और एनिमल है तो सेल वॉल नहीं होता. सेल वॉल के अंदर देयर इज अ फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन which is porous and cell membrane allows the entry exit of material. उसके अंदर there is a round nucleus which is covered with nuclear membrane और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स. एंड दीज क्रोमोसोम्स व्हेन यू लुक एट इन डिटेल they are DNA. Have you seen the structure of DNA? Google it. The structure of DNA is something like this. So DNA से बनता है क्रोमोसोम. Chromosomes and nucleolus are part of nucleus. फिर से एक बार पूरा स्टोरी. अब मैं लेबल्स लिख रहा हूं. Labeling. The red colored thing is a cell wall. The blue colored thing is a cell membrane. This portion is cytoplasm, the jelly-like substance. This is nuclear membrane. This entire thing
is nucleus. A round structure inside nucleus is nucleolus. And thread-like structures containing DNA are called chromosomes. And chromosomes रोज नहीं दिखते, वो तब दिखते हैं जब the cell is ready to divide from 1 into 2. What is a gene? It is unit of inheritance. तुम्हारे मम्मी के कर्ली हेयर है, इसलिए तुम्हारे कर्ली हेयर है. तो मम्मी से तुम्हारे अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक कैसे आता है? थ्रू दिस जीन. दिस जीन मॉलिक्यूल is inside your mom and therefore it has come inside you. Your dad is tall, you are tall. Your mother is dark, then you are dark. So there are a lot of characteristics. Why do you look like your parents? Because you have genes which have come from the parents. Parents के जीन कहाँ से आए? उनके पेरेंट्स में से, और उनके पेरेंट्स के जीन उनके पेरेंट्स में से. So genes is a unit of inheritance. Inheritance मतलब एक पेरेंट से दूसरे बच्चे में, वो बच्चा जब पेरेंट बनेगा तो उसके बच्चे में ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. It controls the transfer of hereditary characters from parents to children. And hereditary characters can be color of the skin, height, weight, IQ मतलब intelligence, shape of nose, color of eyes, facial features, etc. So there are a lot of things which you get from your parents, and whatever you get is called inheritance or heredity. और inheritance और heredity में जो मिला है, that is because of genes. There is a small explanation which I have given you. For example, if your dad has brown eyes, you may also have brown eyes because of the genes coming from your dad. If your mother has curly hairs, you may also have curly hairs because of the genes coming from your mother. There are two main types of cells on this planet. Prokaryotes या prokaryotic cell and eukaryotes या eukaryotic cell. What is the difference between these two types of cells? Prokaryotic cell और eukaryotic cell में the biggest difference is इसका DNA ऐसे ही पड़ा होता, बट यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है. सो डीएनए इज जस्ट लाइंग अराउंड इन द सेल नेकेड, बट द डीएनए ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज secured inside the nucleus. So biggest difference is nucleus is not well organized and no nuclear membrane. But in eukaryotic, uterus is well organized and it has a nuclear membrane also. Examples of prokaryotes is bacteria, blue-green algae, etc. These are all single-celled organisms. Bacteria, blue-green algae, and example of eukaryotic cells are plants and animals. All plants and animals have a nucleus with a nuclear membrane. Therefore, they are eukaryotic. But prokaryotes have no nuclear membrane and no nucleus. Therefore, they are prokaryotic cells. Another organ is vacuole. अब तक हमने कितने parts किए सेल के? 3 main parts we did of the cell. Cell membrane, nucleus, और उन दोनों के बीच में jelly like substance cytoplasm. Cell membrane is porous. It allows entry and exit of materials. Nucleus has a nuclear membrane. Nucleus के अंदर होता है nucleolus and chromosomes. And this entire nucleus is protected by nuclear membrane. And nuclear membrane भी porous होती है. Entry exit of material is allowed.
एंड साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस. साइटोप्लाज्म के अंदर यू फाइंड ऑर्गेन्स. सो वी डिड 3 पार्ट्स. और सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है सेल वॉल विच इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स. सो सेल मेम्ब्रेन शॉर्ट नोट, न्यूक्लियस शॉर्ट नोट, साइटोप्लाज्म शॉर्ट नोट. अब वैक्यूल होता है चौथी चीज सेल के अंदर. वैक्यूल इज नथिंग बट एन एम्प्टी ब्लैंक स्ट्रक्चर इनसाइड द साइटोप्लाज्म इन मिडल ऑफ द ऑनियन सेल. ऑनियन सेल नहीं, सारे सेल्स में होता है. एवरी सेल हैज an empty space inside called vacuole. They can be single, they can be many. They can be very big, they can be very small. Cheek cells have small vacuoles. Cheek cell मतलब literally हमारे जो cheeks है उसके अंदर से we can take out few cells and see under a microscope. You want to see how does cheek cells look under a microscope? This is how they look. More or less shapeless. You can see the dark purple dot, and this dark purple dot is nucleus. This purple color is cytoplasm, and this dark purple line is the cell membrane. और ये छोटी छोटी चीजें are different organs of the cell. So nucleus, cytoplasm, cell membrane, and organs. That's how a cheek cell looks. और cheek cell के अंदर vacuole होता है, but they are small. And general thing about vacuole which you have to remember is there are big vacuoles in plants, always large in plant cells, and vacuoles are always small in animal cells. That's the story of vacuoles. What is vacuole? An empty space inside the cell. Fifth thing of the cell is a plastid. Plastids are several small colored bodies in Tradescantia. सिर्फ एक लीफ का नाम है. मैंगो लीफ, बनाना लीफ, नीम लीफ, मनी प्लांट का लीफ. वैसे ट्रेड्सकैंटिया लीफ, ट्रेड्सकैंटिया इज जस्ट नेम ऑफ प्लांट. ट्रेड्सकैंटिया के लीफ को जब तुम माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो यू विल फाइंड स्मॉल कलर्ड बॉडीज कॉल्ड प्लास्टिड्स. लेट्स सी प्लास्टिड्स इन ट्रेड्सकैंटिया लीफ. इमेजेस. ये रहा ट्रेड्सकैंटिया का लीफ. Plastids under microscope. This is how they look. These are cells, cell membrane, cytoplasm. और ये जो green color है, these are plastids. They can be green in color, they can be red in color, they can be yellow in color. Different colors are available. This is plastids, and they are full and only found in plant cells. Plastids animals में नहीं होते. So coming back to the topic of plastids, plastid एक organ है which is small colored bodies. They have different colors. Some are green, called chloroplast. Green color के plastids का नाम है chloroplast, and they are green because they are full of chlorophyll. So whenever you see colors in a plant, remember that color is because of plastids. What is the color of shoe flower? The shoe flower is red in color. Why? Because it has red colored plastids inside the cells of shoe flower. Bougainville का पिंक फ्लावर होता है तो उसके अंदर पिंक कलर के प्लास्टिड्स हैं. एलेमेंडा इज अ येलो कलर्ड फ्लावर, तो येलो फ्लावर के अंदर येलो प्लास्टिड्स हैं.
So plastids are always colored, and if they are green, जो पूरा plant का दुनिया green होता है, then it is called chloroplast, and that chloroplast is full of chlorophyll, and this is essential for photosynthesis. तो plants जो खाना बनाते हैं by sunlight, water and soil nutrition, that photosynthesis process, that process of making food for the plant, is because of these plastids. So they are very important part of the plant cell. इसके बगैर ये पूरी दुनिया ही नहीं होती. And last is comparison of animal and plant cell. Basically, this is just a table which you have to fill. Cell membrane is present in both. Cell wall is present in plant cell but absent in animal. Nucleus is present in both. Nuclear membrane is present in both. Cytoplasm is present in both. Plastid is not present in animal. Vacuoles are present in both. So this comparison you have to by heart कि कौन सा organ कौन से cell में होता है. And this entire chapter where we are learning about cell and its parts, और cell के मुख्य 3 part is cell membrane, nucleus and cytoplasm. Apart from which we learned कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल इन प्लांट्स. न्यूक्लियर इज प्रोटेक्टेड बाय एन एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन बोथ, एंड प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, एंड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ. बट प्लांट्स हैव लार्ज वैक्यूल्स, एनिमल्स हैव स्मॉल वैक्यूल्स. तो ये 7 चीजें 7 शॉर्ट नोट है, और सातों शॉर्ट नोट का करेक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दिस स्लाइड शो विच यू हैव टू बाय हार्ट सो यू कैन आंसर द क्वेश्चंस. दिस इज प्लांट एंड एनिमल सेल इन फ्रंट ऑफ यू. 8th स्टैंडर्ड में हमने जितना भी सीखा वो मैं हाईलाइट करने वाला हूं ब्लैक कलर से. तुम्हारे सिलेबस में क्या है, यू डोंट हैव टू ड्रॉ दिस, but you need to know cell wall, cell membrane, vacuole, nucleus, nucleolus, nuclear membrane, chloroplast, cytoplasm. That's all. और एनिमल सेल के अंदर तुम्हें क्या पता होना चाहिए? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म. दैट्स ऑल. एनिमल में सेल वॉल नहीं होता जो प्लांट में होता है. What about the rest? The rest will come in 9th standard. So this entire chapter is going to come again with more details in 9th standard and 10th standard. So we learned a lot about cell today. Please remember it. And your homework is to write down the précis notes of this chapter 2 times and give the quiz tomorrow. Bye. This is where we left off in the previous video. We mounted plant cells and animal cells on slides to observe them under the microscope. Let's study them in general in this video. For our convenience, let's select just one. Say the onion peel cells to understand the structure and the contents of the cell. Roughly, we've seen these thick, distinct borders that differentiate each cell from the other one. Then we have these tiny dark spots scattered all over. Also, we can spot this prominent circular structure here, which is very darkly stained. Any idea what these things are? Well, these are the cell constituents. Let's get introduced to each. This outer margin seen here is called the cell wall.
If we zoom in a bit, we notice that there is another layer in the inner side of this cell wall. This is called the cell membrane. Yes, the outer wall is the cell wall and the inner layer is called the cell membrane. The cell membrane is also referred to as the plasma membrane. It is porous in nature. So what does porous mean? It simply means that any material can move in and out of the plasma membrane. But isn't that dangerous? Of course it is. But the simple solution lies in the nature of the plasma membrane. That is because it is selectively permeable. So what does selectively permeable mean here? Just like a guard standing at the office door who allows only members with the identity cards to enter and exit, the plasma membrane also allows only specific materials to move across. We will look at this in details in our upcoming videos. This was just to understand how the plasma membrane is selectively permeable. Now let's move ahead to know about the cell wall. Do you think all cells have cell walls? Well, the answer is a no. That's because animal cells do not have cell walls. An animal cell only has the plasma membrane and not the cell wall. The cell walls act as protectors for plant cells. It's composed of a non-living rigid structure that is cellulose. It not only acts as a protector, but also gives a proper shape to the plant cells. It also helps in cell-to-cell interactions and provides a barrier to undesirable macromolecules. It protects, it gives shape to the cells, and it helps in cell-to-cell interactions. Clearly, the cell wall is a very important part of the plant cell structure. Now let's get into this lighter region here. This lighter region is the cytoplasm. It's a jelly-like substance filling up the cell space. And these tiny parts in the cytoplasm are the organelles. And what exactly are they? Just like the human body has different organs, the cell has various organelles. And just like the organs, each organelle performs a different function. Let's study each organelle and its functions in our upcoming videos.